Good morning, students. So our next topic is shortcut buttons in a window. At the upper right corner of an open window, you can notice some buttons. These are called the shortcut buttons. जब भी हम कोई विंडो ओपन करते हैं तो वहाँ पर राइट साइड में हमें कुछ बटन्स नज़र आते हैं, उन्हें हम शॉर्टकट बटन्स कहते हैं. So let's see some of the shortcut buttons in a window. Minimize button. The window shrinks to the taskbar when this button is clicked. जब भी हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो विंडो छोटी होकर के टास्क बार में नज़र आने लग जाती है. मैक्सिमाइज बटन. इट इंक्रीजेज द साइज ऑफ द विंडो टू इट्स मैक्सिमम. इस बटन पर क्लिक करने पे विंडो फुल स्क्रीन में आ जाती है, फुल साइज हो जाती है विंडो की. रिस्टोर डाउन बटन. व्हेन यू मैक्सिमाइज अ विंडो, द मैक्सिमाइज बटन लुक्स लाइक दिस. Restore down resize the window back to its original size. Restore बटन पे क्लिक करने पे विंडो फिर से रिसाइज होकर के ओरिजिनल साइज में आ जाती, मतलब छोटी हो जाती. क्लोज बटन. इट क्लोजेज अ विंडो व्हेन क्लिक्ड. क्लोज बटन से विंडो क्लोज हो जाती. विंडोज 7 एक्सेसरीज. Accessories is a folder or a program in which many useful programs are there. So let's see the accessories program calculator. If we want to do any calculation on a computer, so we can use the calculator program of a computer. To use a calculator on a computer, we have to click start button, then all programs. In the all program list, we see accessories, and in the accessories we see calculator. So click on the calculator. It will look like this. It has number also and operator also, like plus, minus, multiplication, division, all this. So we can use this calculator and do calculation also. Setting wallpaper. जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो स्क्रीन होती है उसे हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं. उस डेस्कटॉप स्क्रीन के बैकग्राउंड में जो पिक्चर नज़र आती है उसे हम वॉलपेपर कहते हैं, और उस वॉलपेपर को हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से. सो हाउ टू चेंज अ वॉलपेपर, लेट्स सी बाय सम स्टेप्स. राइट क्लिक at any empty area on the desktop and click the personalize option. The second step, click the desktop background option, you get a new window. Step 3, select any option from picture location, for example Windows desktop background. Step 4, choose the picture of your choice. You can adjust the position of your picture using picture position option. Step 5, click the save changes button. So after following these steps, we can change the desktop background like this. Next, screensaver. Screensaver is a feature of a computer in which when we don't use a computer for some time, so some picture or graphics appear on the screen. It is called a screensaver. And as soon as we use mouse or press any key from the keyboard, so desktop appears again on the screen. Changing the screensaver. We can change the screensaver also. So how to change screensaver, let's see. Right click at any empty area on the desktop and click the personalize option. Step 2, click the screensaver option, a new window appears. Step 3, select any screensaver from the screensaver list box. Step 4, to set the time of the computer after which the screensaver starts, set the number of minutes in the wait box. Step 5, click the apply button. Step 6, click the OK button. So after following these steps, we can set the screensaver on the computer.